अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जपया जा, निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जपया जा। कहा करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बट परता, कहा करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बट परता, प्रभु मेरे का बट परता, प्रभु मेरे का बट परता, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन मारी, सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन मारी, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते ऊपर को नारी, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते ऊपर को नारी, जात ऊपर को नारी, जात ऊपर को नारी, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर
का बट परताप, प्रभु मेरे का बट परताप, प्रभु मेरे का बट परताप। गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं, गुरपुर मेरी राख नहीं। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। गुरपुर मेरी राख नहीं, 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 गुरपुर मेरी राख नहीं। ना उच्चा नाल जावी के मैं तेनू भुल जावा, इना हेठा भी न सुट्टी कखां विच रुल जावा। इना उच्चा नाल जावी के मैं तेनू भुल जावा, इना हेठा भी न सुट्टी कखां विच रुल जावा। जेड़ा भुगत सका मैं, जेड़ा भुगत सका मैं, तू बयाने जो कर रखी। तेरा हर वेले करा शुक्राने जो कर रखी, तेरा करता रहा मैं शुक्राने जो कर रखी, शुक्राने जो कर रखी। शै विच वेखा तेरा नूर ही समाया, होवे सब्र उन्ने च जिन्ना मेरे हिस्से आया, होवे सब्र उन्ने च जिन्ना मेरे हिस्से आया। होमे कदे ना विखावा हो करोड़ी पावे लखी, तेरा हर वेले करा शुक्राने जो कर रखी, तेरा करता रहा मैं शुक्राने जो कर रखी, शुक्राने जो कर रखी।
ऊच नीच नू ना जाना दोहा वक्तां च देवी बस हक दा ही खाना दोहा वक्तां च देवी बस हक दा ही खाना इस जग दियां पैड़ियां अलामतां तो डकी तेरा हर वेले करा शुकराने जोगा रखी तेरा करता रहा मैं शुकराने जोगा रखी शुकराने जोगा रखी। चढ़ी हर वेड़े रहे तेरे नाम दी हमारी ना ही रसना मेरी चो गल निकले कोई माड़ी ना ही रसना मेरी चो गल निकले कोई माड़ी सदा अंग संग होवी तू कदे न मुख बट्टी तेरा हर वेले करा शुकराने जोगा रखी तेरा करता रहा मैं शुकराने जोगा रखी शुकराने जोगा रखी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। Jai Guruji. Aarti is about to begin. Would request seniors to please come forward and everyone else to form 4 queues behind them. Aarti would be played only once, so request 4 Sangat to do Aarti together. Thank you. Jai Guruji. ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धा की धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा
अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसानन करुणासन। हंसानन करुणासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज ते सोहे। स्वामी दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा। चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर पांबर अंगे। स्वामी पांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक। ब्रह्मादिक सनकादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये चक्रमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। स्वामी जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी। कहते शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु
वाहे गुरु 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 Jai Guruji, please settle down. Request you not to step on the mats, that is for the Langar Prasad to be kept. Request you to be extremely cognizant about Jal Prasad water bottles. Please, please, please do not leave them unattended. Carry it along with yourselves. If you are not able to consume Langar Prasad completely, please ask any of the Sevadars and they will pack it for you. Next big event in temple is Baisakhi on April 14th, Friday, 6 p.m. onwards. On April 13th, Thursday, temple will remain closed for the preparations of Baisakhi festival. So please plan your visit to temple accordingly. And apart from these two dates, the schedule for the month of April remains the same. That is on Thursdays, 6 p.m. to 8 p.m. and on Sundays, 4 p.m. to 6 p.m. कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आइए आंटी। जय गुरु जी टू ऑल। आज मेरे पास 2 सत्संग हैं। लास्ट फ्राइडे आई स्लेप्ट अराउंड 1 AM और आजकल गुरु जी थोड़ा अमृत वेला उठा देते हैं, तो 3:30 अलार्म हुआ एंड उठ के देखा कि मेरे रूम में पूरी एक वॉल पे स्लाइडिंग ग्लास डोर है पूरा। तो मैं क्लोज करके नहीं सोई थी वो, ना मैंने उसको कर्टन से कवर किया था उस दिन। 1 बजे सोई हूँ, सब कुछ नॉर्मल था। 3:30 उठी हूँ तो उठ के ऐसा लगा कि रूम बहुत ठंडा हो रहा है। मैंने एकदम से देखा तो वो पूरा ग्लास डोर खुला हुआ, पूरा ओपन। उसके आगे एक एक नेट का और ग्लास है, डोर आई मीन, वो भी पूरा ओपन। तो मैं बहुत डर गई एंड जैसे मैंने लाइट्स ऑन की, बहुत ऐसे डर के मैंने अपना वार्डरोब ओपन किया कि 100% कोई मेरे रूम में आया है, बट मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, रूम में हर चीज़ बिल्कुल ठीक है और कोई वार्डरोब में तो नहीं छुपा हुआ। मैंने ओपन करके देखा, वो भी बिल्कुल नॉर्मल। फिर मुझे लगा घर में सब ठीक है, लॉबी में सबके लगेज बैग है वो हैं कि नहीं। बहुत डर के मैं रूम से बाहर निकली, मैंने दोनों वॉशरूम्स चेक किए, मैंने सबका लगेज चेक किया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मेन डोर चेक किया, सब बंद था। आके अमृत वेला ओपन किया, लिंक बैक
उसमें ध्यान लग ही नहीं रहा, बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि कोई रूम में आया है, पूरा ओपन था डोर, बट कैसे कि सब कुछ ठीक है। उसी टाइम याद दिलाया गुरुजी ने कि थर्सडे जब मैं सत्संग अटेंड करके घर जा रही थी, आई वाज विद वैभव भैया, वैभव अंकल, एंड उनको मैं रास्ते में बोलती हूँ कि अंकल अपना कोई सत्संग शेयर करो, तो वो मुझे सुना रहे कि वो छतरपुर से फरीदाबाद अपने घर जा रहे थे एक दिन माथा टेक के, तो रास्ते में वो जो रोड है, जो वे है उनका घर जाने का, वो बहुत रिस्की है, जंगल था, और कहते रात को मैं लेट हो गया 1 o'clock, तो एक कार मुझे कॉन्टिन्यूसली 15-20 मिनट से चेज कर रही थी, और मेरे साथ मेरी 7-6 मंथ्स की नीस थी, और मेरा भाई मुझे फोन करके डांट रहा है कि तू बच्चे को क्यों लेके गया, पीछे कार तुम्हारे लग गई है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कहते मैं गुरुजी को बैक ऑफ द माइंड प्रे कर रहा हूँ, गुरुजी प्लीज कुछ कर दो, बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, गाड़ी क्यों पीछे लग गई है। तो कहते कि उसी टाइम वो गाड़ी मेरे पास साथ आई, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, बहुत स्पीड में गाड़ी मेरे साथ आई, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, और वो पता नहीं डर गया क्या हुआ, और वो गाड़ी पीछे ले गया, उसके बाद वो पीछे नहीं आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे करते हैं कि कुछ भी गलत होता है उनकी संगत के साथ, तो वो सामने वाले को अपना ऐसा रूप दिखाते हैं कि वो डर जाता है और वहां से पीछे हो जाता है, और ये बात मैंने उनके YouTube सत्संग में भी सुनी है। तो आई रियलाइज कि हाँ आप ही थे, और आपने किसी को कुछ दिखाया, और आपने मेरे को प्रोटेक्ट करके रखा, और मेरे रूम में किसी को आने नहीं दिया। तो पहला सत्संग तो ये, और दूसरा कि बहुत मतलब गुरु जैसे बोलते हैं, मुझे मानो, मुझसे मांगो मत, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है वो इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, बट मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि करके ऐसे देख लेते हैं, और मेरे साथ गुरुजी ने सच में मिरेकल किया है। मैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ 2 बहुत बड़े अटके हुए काम थे, और मम्मा भी परेशान, और मैं मम्मा को रोज मम्मी फोन पे बोल रही है ये काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और मैं बोल रही हूँ क्यों टेंशन ले रहे हो आप, गुरुजी है ना वो कर देंगे। तो पिछले, और गुरुजी ने बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही मुझे मैसेज दे दिया था कि तेरे मार्च के एंड तक सारे काम बन जाएंगे, सारे तो खैर क्या ही थे, वो 2 बहुत बड़े काम थे। लास्ट थर्सडे गुरुजी ने मेरे को कॉल करवाया और मैसेज दिया कि पहला काम बन गया, जय गुरुजी। उसके बाद आज थर्सडे अमृत वेला मेरे को मम्मा का कॉल आता है कि दूसरा काम भी बन गया है, एंड थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मॉम बहुत खुश थी, उन्हें देख के ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत खुशी थी कि वो काम बन गया। वो बहुत टाइम से कोई चीज उनको चाहिए थी और वो मिल नहीं रही थी, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कोई सेल नहीं कर रहा था, और वो मम्मा को था कि यही प्रॉपर्टी मिले, और उन्होंने मना कर दिया था मुझे प्रॉपर्टी नहीं सेल करनी है। इनफैक्ट उन्होंने 3 महीने पहले वो किसी को रेंट आउट कर दी, तो चांस तो बिल्कुल 0 था कि वो नहीं मिलेगी। बट कल अष्टमी वाले दिन मम्मा को कॉल आया कि दे सकते हैं, फिर 9वीं वाले दिन पूरी बात हो गई एंड वो मिल गया। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। कीप ब्लेसिंग, कीप ब्लेसिंग टू एवरीवन। जय गुरु जी। शिंकी आंटी आइए। जय गुरु जी। शुक्राना सारी संगत को एंड गुरु जी को शुक्राना, सबको जय माता दी। और सत्संग गुरु जी के इतने ज़्यादा हैं, जीवा कम है और ना ही इतनी समझ है सत्संग कैसे करूं, पर उनका हुक्म है तो सत्संग करना है। और ऐसा है कि पूरी लाइफ सत्संग से भरी हुई है गुरु जी के मिलने के बाद, और सत्संग बढ़ते इतने ज़्यादा। और वो मेरे को इतना कह रहे थे कि तेरे साथ सत्संग नहीं महासत्संग हुए हैं, ये तेनू सुनाने पैने हैं ते ये तेनू दसना ही पैना है तेरा किवें किवें मैं कल्याण किया है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी 2015 में मेरे साथ जुड़े हैं और 14 में मेरे मॉम एक्सपायर हुए। आफ्टर दैट मैं बहुत बीमार हो गई, तो ये मैं सत्संग जो सुनाने जा रही हूँ वो 2017 का है।
तो गुरुजी के साथ कनेक्शन इतना बढ़ गया था तब मेरा, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी परीक्षा बहुत ज़्यादा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। सीरियसली उन्होंने मेरे को इतना निचोड़ा है, इतना ज़्यादा निचोड़ा है हर तरफ से। हेल्थ के पक्ष से तो बहुत ज़्यादा निचोड़ा उन्होंने मेरे को। और 2017 में जुलाई का मंथ था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एकदम से। तो मैंने अपने अंकल को फ़ोन करा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ब्रीथलेसनेस हो रही है और मेरी स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा है। इवन मेरे पाँव ज़मीन पे रखे नहीं जा रहे, वो नीचे से गोल हो गए थे। और वो कहते अभी तो मैं घर से गया हूँ, तब तो तू ठीक थी, अब क्या हो गया? मैंने कहा मैंने आपको बताया नहीं, पर मेरी तबीयत ख़राब है। तो कहते मैं आता हूँ। आधा घंटा हुआ, ये आए नहीं। मैंने दोबारा फिर से फ़ोन किया, मैंने कहा आ रहे हो कि नहीं आ रहे, मैं एक्टिवा लेके जाऊँ? तो इनको लगा शायद अगर इतनी धमकी मिल रही है तो कुछ ज़्यादा ही होगा, तो आ गए। तो मेरे को कहते क्या हुआ? मैंने कहा जी मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरे को लग रहा है मेरा सांस नहीं मेरे को आ रहा। तो इमीडिएटली मेरे को लुधियाना लेके गए, हमारे डॉक्टर थे भूपिंदर जैन, उनके पास। तो वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, हम उनसे ही डिस्कस करते थे। जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो इमीडिएट वो मेरे अंकल को कहते हैं कि पहले ना इसका ब्लड टेस्ट करवा के आओ। तो हमने कहा ब्लड टेस्ट बता दीजिए कौन सा करना है। तो वो कहते नहीं आप जाओ, मैं लेबोरेटरी में फ़ोन कर रहा हूँ। तो उन्होंने लेबोरेटरी में फ़ोन करा, ये जैसे मैं ब्लड टेस्ट देने गई, मेरे बॉडी में से ब्लड नहीं निकल रहा था। वो प्रिक कर रहे थे पर ब्लड नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा थिक हो चुका था ब्लड। स्वेलिंग भी बॉडी में बहुत ज़्यादा थी तब। तो बड़ी देर से टेस्ट हुआ मेरा, तो हम वापस आए तो उनके पास बैठे। तो वो मेरे हस्बैंड को देख के कहते हैं तू इहदे नाल बैठ के चाह चू पीना हुन्ना कि नहीं, इनू टाइम दिना हुन्ना? तो मैंने कहा ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो अनुपम कहते मैं बिजी होता हूँ, मैं सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, तो मैं इतना कहाँ इसके पास, इतना मैं कहाँ से इसको बार बार फ़ोन करूँ मैं? कहते हैं बेटा थोड़ा सा ध्यान रखा कर। मैंने कहा इतनी बात बोली है, इट मीन्स समथिंग सीरियस। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ? कुछ नहीं होया, कहते बस अब दवाई शुरू कर ते 5 दिन बाद मेरे को दोबारा आएंगे। हम लोग घर पे चले गए और सारे दिमाग में वो बातें घूमती रही कि नहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है भी थी, पर डॉक्टर भी इतना बोल रहा है, इट मीन्स समथिंग सीरियस। तो हम लोग घर आ गए। तो दवाई ऐसी थी वो खा के मैं ना बेहोश टाइप रहती थी कि मेरे को सुर्त नहीं रहती थी, वो मेडिसिन लेके होम्योपैथिक भी। तो मैं ले रही थी, 2 दिन हो गए थे मेरे को लेते हुए। तबीयत मेरी बहुत ख़राब, बच्चे कभी जल प्रसाद दे रहे हैं मेरे को, कभी कुछ दे रहे हैं। तो मैंने इनको बोला मेरे से कुछ हो नहीं रहा, हम कुक रख लेते हैं किचन में। तो अनुपम कहते रख लो कुक, तो कोई बात नहीं, पर ये याद रखना खाना तो मैं तेरे हाथ से ही खाऊंगा, जिससे मर्जी बनवा जो मर्जी कर, पर खाना दी प्लेट तो मैं तेरे तो ही लेनी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो सुबह आंटी आई खाना बनाने, उसने खाना बनाने लगी तो मैंने कहा रुक जा। तो मैं किचन में गई, मैंने कहा इनको मैं दे दूं अपने हाथ से खाना। उस दिन इन्होंने वाइट कपड़े डाले हुए थे, वाइट लोअर और वाइट टी शर्ट। तो मैं इनको कह रही थी कि तुसी फटाफट नहाओ ते मैं थोड़ा खाना हुण लेके आ रही हूँ, फिर तुसी ये ना कहियो तुम दिता नहीं, मैं अपनी तरफ से लड़ रही हूँ। तो मैं खाना जैसे ही कुछ खाना बना तो मैंने प्लेट डाली और मेरे को लगा अनुपम ना मैं बेड के पास मेरी दवाइयाँ देख रही हैं। तो मैंने कहा की दवाइयाँ देखी जाने हो, ना के आओ तो खाना लवो, मैं हुण लैके खड़ी हाँ खाना। तो मैं ये आए नहीं, कितनी देर तक मैं डाइनिंग पे बैठ गई। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये खाना लेके आ नहीं रहे। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये बाहर मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं। मैंने कहा अगर तुम कहाँ थे? कहते मैं बाहर कोई आया था उससे बात कर रहा था। तो मैंने कहा अंदर कौन है मेरे बेड के पास, दवाइयाँ कौन देख रहा था मेरी? तो कहते पता नहीं। हम दोनों अंदर गए, अंदर खुशबू आ रही थी बहुत, और मंदिर में भी बहुत खुशबू आ रही थी, यूजुअली आती ही रहती थी और बहुत ज़्यादा उस टाइम तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। मीनवाइल चलो ये ऑफिस चले गए तो मैंने अपनी दवाई लेनी शुरू करी। वो सिर्फ छोटी छोटी फिंगर टाइप्स जैसे जो होम्योपैथिक की होती हैं वो दवाइयाँ थी वो, तो जो कि सिर्फ 5 दिन के लिए थी। उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी में डाल के ऐड करके वो लेनी थी। जैसे मैं वो दवाई डालती थी वो फिर से भर जाती थी, मैं फिर से डालती थी वो फिर से भर जाती थी। और अमेजिंग हो रहा था, शाम तक अगले दिन, उसके बाद अगले दिन वो दवाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और हम लोग इतने हैरान थे वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही। 5 दिन की दवाई वो पूरा महीना चली। आई डोंट नो वो कैसे फील होती थी, वो कैसे वो ब्लेस हो गई।
मेरे को नहीं पता, पर मैंने वो दवाई महीना खाई। जब 5 दिन के बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उसने पहले ही बोला था खन्ने से ही आप ब्लड टेस्ट करवा के आना मेरे पास। तो जो रिपोर्ट्स मेरी आई थी तो वो इतनी ज़्यादा गंदी आई थी। ब्लड काउंट्स जो थे मेरे 500 से ऊपर थे, 5000 से ऊपर थे। इतना ज़्यादा मेरा सारा सिस्टम बॉडी का इतना ख़राब था, इवन कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे कहाँ, सब कुछ बहुत गंदा टेस्ट था। और जो हम रिपोर्ट दोबारा लेके गए, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। और वो डॉक्टर ने जब दोनों का कंपेयर किया, वो कहता कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ नॉर्मल ਕਿਵੇਂ आ गई। तो फिर उसने कहा दवाई बताओ कौन सी खाई है। मैंने वही बोली जो उसने दी थी, वो उसके आगे रख दी। मैंने कहा ये खाई है। कहते ये तो खत्म ही नहीं हुई, तू खादा की है कुड़िए। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਰੀਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। 1 ਮੰਥ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨॉर्मल ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। Udit uncle. Jai Guruji. So it's a satsang, or you can say blessings, about my recent trip to India. I went back after 8 years. I went on February 1st, and I was talking to my friends over here that there would be a Shivratri while I'm in India. So I hope everybody is able to listen. So it was Shivratri on I think 18th or 19th of February, and that time I was in India, and I was talking to my friends before going to India that what should I do in India, because it's a very important and a very big day. Should I be in Haridwar, as it's from Lord Shiv? Also, should I be in Delhi, or should I go to Bade Mandir? So my friends told me that going to Bade Mandir is next to impossible because it's a huge lineup. It's a huge lineup. I was like, okay, whatever Guruji wishes for me. I landed on first, went to the Bade Mandir on the second, and I was sitting there having my chai prasad, and I got a thought in my mind and in my head that what if I can have a chance to do a seva in a Bade Mandir? I heard stories from people that it's very difficult to get a seva in Bade Mandir. And I was just sitting, I was like, it cannot possible, but what you're thinking is something, you're wishing something beyond what you are capable of getting. I stood up, went in the mandir. I was talking to an uncle there, Sevadar, and he's like, come on Shivratri for seva at 8 in the morning. And I was like, what? Like, Shivratri pakka hai? So yeah, he's like, yeah, give me a call and come on Shivratri. Went there, and मैंने लोगों को सुना, like, people talking about Guruji that लाइना लगेंगी, right? Like, as Guruji used to say कि line लगेगी. मैंने literally उस दिन on Shivratri I've seen people lining up right from the main road till the end, and it was not ending, like non-stop, keep going, keep going, keep going. I got a blessing to do seva at a Jal Prasad counter. So they made a pandal right next to the Bade Mandir, like there's a parking lot. So we were there. It's a huge pandal, and we were doing seva all day there.
and I got a true chance to go into the Bade Mandir Darbar, like right in front of Guruji, where we all see the pictures and all. And I got a chance to stand there on a Shivratri twice for at least 10 minutes, and I'm just crying that what I've got, I have no idea, like how blessed I am that on this big day I am standing in front of Guruji, and that too for a 10 minutes. Like people are just walking, they are not allowed to stand, and I was so blessed. Like I was getting goosebumps, my tears were rolling out, and I was like, wow. Like I always used to complain, Guruji, you don't listen to me, you listen to everybody. But that day, he blessed me. We were there for whole 12 hours. Uh, it was amazing, like a dream come true. Uh, I've seen that singer Siddharth Mohan was there. He was performing, and nobody was there. Like, obviously, like he's singing, and you can hear the songs, but his bhajans. But everybody was like, can we spend more time in the mandir, not in the pandal? It was amazing. Got a chance to meet few sangat from Toronto that day. I was very shocked. Bobby uncle was there that day, and he came and met me at the seva counter. He was also doing seva. It was like very amazing that a sangat from Toronto all the way to India on a same special day. We got a chance to meet each other over there. It was blessing. Uh, when you travel to India, there is always an issue of luggage, and we all experience, because only you allowed only to take 2 bags and a backpack or a carry-on. Same happened with me while I was coming back to Toronto. Of 7 days before my trip, my flight to Toronto, one of my friend on the same airlines, he got fined for around 7,000 rupees for carrying an extra luggage. Like his weight was over, like his luggage weight was over. And I was like praying, start from my home all the way to the airport. I was just praying. I was doing mantra jap. I was like, Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji. Because, it's so many things. You are just confused what you have to take and what you can leave behind. So, same thing. And my Mamaji was coming with me. All of a sudden, when I was saying goodbye to him, he said, I'm coming to drop you. And my Mamaji is like, we respect him a lot. And him coming with us to drop me is another big thing. And plus, I know what I gonna face on the airport. It could be like 1 hour wait or half-hour wait. I don't know. Finally, I came to airport, took my luggage, said goodbye to them, went into the counter. The guy at the airlines was holding his hand. Sir, please come. And he's like, okay, so we stopped allowing the backpack, like a laptop carry-on bag, laptop bag. So, you have to get rid of one bag. I was like, nobody told me about this. So he was like, okay, what I can do is, I can check in your carry-on, whatever important stuff you have in your carry-on, you can take it in your backpack and you're okay to go. And he was folding hand, like the same guy, the same airlines charged my friend 7 days ago 7,000 rupees. And for me, it was like the guy folding hands. And he's like, whatever you can do, it's fine. Like, I'm not charging you anything for an extra check-in. So I got 3 check-in bags going in and 1 backpack. My entire journey from here to going to India, got upgraded seats on the way back. I was connecting from US. I came around 7 hours early from my next flight, and I talked to the second flight. Hey, can I have a early check-in for the sooner flight to Toronto? Yeah, sure. In 2 hours, you're flying from New York to Toronto, where I have to wait for an entire day, or like 6-7 hours in New York to come back to Toronto. So everything was super smooth. It was all Guruji. I would say thank you so much, Shukrana. Thank you so much, Guruji. Jai Guruji. जय गुरु जी। और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं कि आज आइयान जी?
Jai Guruji Maharaj, Shukrana. Thanks Guruji for blessing me and asking me to share satsang. Truly Guruji Maharaj makes the impossible possible, and that's been my journey with Maharaj. And I was asked to share how Maharaj initiated me, and you know, my mind always works because I tell Guruji, Guruji, I've shared this so many times. And then he reminds me, you know, that, you know, don't use your mind, don't use your logic. I'm always like, not fighting with him, but I'm always like, Maharaj, everybody knows. And he's like, but, you know, just listen to me. And he reminded me today of Varun Uncle's satsang that Maharaj used to ask him every day to share his satsang, how he initiated him. And then one day he told Guruji, Guruji, I'm not sharing the satsang. And then for 3 years, Maharaj didn't ask him to share satsang after that. So I was like, Guruji, maaf karo, I want to share this. It's because it's all you're doing, it's all your grace, it's all you. And then when the human mind comes, it's like, oh, I, and I don't want to be like that. So I will make it, I will do my best to make it short. I was born in Iran, and my grandma was very spiritual, and I pretty much used to call her my mom. And then we left to Canada when I was 13. And when 6 years after, I had this inner calling to go to Iran. And no matter how much I told my mom, she wouldn't agree. And then suddenly this inner voice, I can't describe it. It's very difficult to describe, but I heard a voice. And it told me to tell my mom that if I don't see grandma and she dies, I'll never forgive her. So I told those words, and everybody knows, again, with Iran, what's happening. So obviously it was more strict. It was as strict back then. If you had a hair coming out of your scarf, you could be arrested. And so she said, you're not going. But then when I said those words, my mom allowed me. And of course, again, it's all Guruji doing. And he turns the impossible possible, because my mom is a very, very, or used to be very, you know, stubborn woman. And she wouldn't, it's her way or no way. And so I felt this energy, like, you know, changing the situation. A week later, I was in Iran alone. You know, and the first night that I slept at my grandmother's house in Iran, 4 or 5 in the morning, I woke up. We used to sleep on the floor. It was me, my cousin, and then my grandma was in her bedroom, but it was open. And 4, 5 in the morning, I sit up, and then I see a bald-headed man standing right in front of me, few feet, literally, like if I'm sleeping right here, this is where the man was standing with this forgot, you know, this microphone or speaker. And so I saw a bald-headed man, 2 hands facing like this, standing like this, and with a vertical eye, one vertical eye, everything looking like a human. And I only saw from his hip up. I didn't see the, and he was like standing like this behind her closet. So the first thing that came into my mind, and I was shivering, and the first thing that came into my mind was that I'm seeing a ghost. I had heard ghost stories. The mind wants to protect itself. I was like, I'm seeing a ghost, I'm seeing a ghost. It's a ghost. And I just covered myself, and I only knew this one mantra from the Quran. I've never been religious. I don't come from a religious family. And I just kept repeating that. And I was like, please don't harm me. And I kept saying it. And then, I don't know, eons. And I kept checking to see if my grandma would wake up. And the moment I heard her, because she woke up for her morning namaz, the morning Islamic prayer, the moment she woke up, I just ran to her and I was like, look, there's a man in your home. And I was shaking, and I was like, you know, that he has a third eye. And she put her hands on my head and my shoulders, and then she said, he's always around me. And I was like, did I see a ghost? And she said, don't worry, he's always around me. So again, I want to keep it very, very brief.
came back to Canada. I left her home. I never returned to her home after that incident. Never. I was so frightened to experience that again. I just came back. She always traveled to my aunt's house to see me, and then that was July 2003, and I came back to Canada end of July. My grandma passed away 3 months later. I wasn't aware of Maharaj. It was in my time to be aware of Maharaj, but he's always been there for us. He's always looking out for us. He's always taking care of us, and he knew that I would have suffered significantly if I hadn't seen my grandma. So he made me go to Iran to see her. And of course, it took 15 years later for all the dots to connect. So if you're going through something right now, or you're experiencing something right now that it's not connecting, it's related to something for your journey or your progress in his time. He makes it extraordinary, and he makes it so unpredictable. And that's why Guruji Maharaj used to say, leave your ifs and buts and give me your mind. Because no matter how much you try to figure things out, it'll never be how Guruji has planned it, because he wants to pull you closer to him, and he's going to make it unimaginable anyway, so why think? This is all for myself too. And so I make it short. I was bedridden I was ill for 6 years. I was bedridden for 3 years. It started in 2012. It was the most excruciating time of my life. But that excruciating time and suffering time is the most blessed episode, and the most, I say thanks to Guruji that I went to hospitals every single day. I say thanks to Guruji that I lost my hair. I say thanks to Guruji Maharaj that I lost my car, lost my house, lost my job, everything. Lost all my money. And I literally was in hospitals every single day. I went to mental institutions because it had hit from the physical, it hit to mental ailments. Because, you know, when the 1 month turned to 2 months bedridden, and 3 and 4 and 5, it just killed me. During the second episode, so it happened in episode, during the second episode, I saw a white light enter my room, and that plays a significant part into how Maharaj connected the dots. The third episode, when I was bedridden, one day I surrendered. I remember I was like, if this is my life, if I'm meant to be bedridden, I remember even looking at my bed, I'm like, if I'm meant to spend my life on that bed, I don't care anymore. I'm done fighting. I'm done. I literally put my white flag up and I was like, I'm done fighting. And at that moment, a couple of minutes or whatever, sometime later, I had a vision. It's like something put my body back into my grandmother's house. And I saw that man again, the vision of that man. And I heard that same voice that I had heard long time back telling me, pray to me. And I said, you're the only supernatural being that I've seen. You help me. These are the exact words that I said. You help me. And I'm not crazy, even though I'm going to mental institutions. My grandma confirmed. So I'm not crazy. So I said those words. And that was June 2018. My life became a miracle after that point. Make it short. 1st of July, I am called again, that inner voice, to go. I lost all my hair and my scalp was oily on all the time. And my logic was, again, he places that thought, he gives you that thought. And I was like, if I go put hair color on my hair, maybe it won't look as ugly as it does. And I go, and Shoppers Drug Mart was closed. And then I'm sitting literally like a homeless at Young and Bloor. And then I hear the voice again telling me to go to C3 Church. Make it short. Someone referred this church to me. So then I start Googling. It's downtown. I start walking to it. I get to the church. Suddenly they stopped it. I was crying and walking. I was fast walking and crying on the way to church. And then suddenly they stopped the music. And then the girl said that someone on the way to church today was crying and running, and God wants you to know that this suffering is over and land of grace is near. Exact words. And
truth, and Guruji Maharaj can speak through anyone, can come through anyone. He may be sitting right beside you right now and you don't know where he is and who he's coming from. Like, we don't know nothing. Like Mark and I always say, the only thing we know is that we know nothing. And so anyway, he spoke through that girl, and true to his words, an hour later, I'm standing in a bookstore, downtown Toronto, at BMV Books. They sell used and new books. And I'm standing there begging God to help me because I'm going back to my bed. And at that moment, I see that white light, the vision of that white light that I had seen when I was bedded in the year and a half before that. And that same voice again, loud voice, is telling me to pick up the book right in front of me. And at that moment, I see a book right in front of me, which wasn't there before. And just the light, the vision of the light, and the light connected. The book was the divine light. And I pick it out, and it's that Swarup of Maharaj, white Swarup. I look at the cover, I open the book, and it's saying how Anita Kumar was given, I think 3 months to live, and how she had a hole in her heart, and how Guruji Maharaj had healed her, and I made fun of the book. I was like, God doesn't exist, and who is a guru anyway, and what is, all this nonsense, and I made fun of the book. But the book came home with me, never touched it. 5th of July, I have a dream darshan of Guruji Maharaj. 2 days later, he tells me to open the book. I open the book, and it says in the book, Guruji Maharaj is Lord Shiva. And I was like, who's Lord Shiva? And then I Googled it, and then that's the first time that the third eye and the third eye connected. And I was very difficult to explain the experience that I had at that moment. And I was like, look, Guruji Maharaj, if you're God, and if you are the being that I had seen at my grandmother's house, I need something special from. I will believe you. I believe in anything right now. And I just need help. And at that, the next line I read was, Guruji Maharaj's special day is July 7th. And he's like, look at your phone. And I look at my phone, and I've opened the book on his birthday. 6 years of ailments, he healed in 1 week. Gone. Everything. Best of the best doctors, Germany, Iran, Canada, no doctor had answers or cure or even a diagnosis for a lot of my ailments. 1 week, everything healed. Everything. He turns the impossible possible. Why I had to go through what I had to go through, thank you that I had to go through it. I welcome suffering. It's a blessing. The problems that he blesses for us to experience, it's his doing, because there's a satsang. It's meant to be a satsang in the making. And it draws you closer to him. So there's nothing he cannot do. He can make a non-Indian. Of course, I don't believe in Indian, Persian, Christian. I don't believe in any of that because we're all souls and we're all one. But he can do anything. And like he told Commander Uncle, you have to be blessings ready. He got me to a point where I had no more of me anymore. It was like, whatever you do, I will be bowing, and you tell me to go this way, I will. You tell me to go that way, I will. He got me to that point because I used to be a very logical, very me person. And he did it in such a way that there's no more of me inside. And of course, I still have it here and there. He knows it. But, he made me get to a place where he gets you blessings ready. And like he said, I squeeze you like a lemon, and I love those who I squeeze like a lemon. And I know personally, many of you talk to me and you're going through that squeezing. Congratulations for being loved so much by Guruji Maharaj that you're going through that squeezing. There's nothing he cannot do. He's taking care of every single thing in your life. Nothing happens without his will. Nothing. So much shukrana to Guruji. Thank you so much for being that vessel. Because he also told me on the way that I'll be sharing satsang, and I was like, no. And thank you for reminding me that it's only him that I should think about. It's only his, I should only listen to him and not think about anything. Anyway, thank you. Sorry
that it was long. Jai Guruji Maharaj. Thank you. Jai Guruji. Mohit uncle. Jai Guruji, I was put in a spot by Vishal uncle. I wasn't expecting this, but now that he's called me, I do have a satsang to share. I've been a little coy about it because it's part stupidity on my part. So when we come from India, we carry our screwdrivers and toolboxes along, and we want to repair everything. Some of us and some of my friends already know about it. So a water flooding ka issue tha. Like there was a bath faucet that was faulty in my apartment. My landlord knew about it, and I think I told them that I was feeling bad for her that she had to go through the entire process because I felt the plumber was fleecing her. So I offered I would do it. As luck would have it, I was trying to repair it, but जो पीछे से जो valves होते हैं, they were faulty. So I couldn't switch off the water supply. I think the valves were faulty under the vanity sink. So when I actually started, I wasn't expecting the pressure to be that high. I thought maybe it's going to be 1/4 the pressure, and I'll probably, even if I take the cartridge out, I'll be somehow able to shove it back in. I was totally wrong. That pressure was insane. So in the bathtub, I'm trying to put that cassette in, that cartridge in, and I fell thrice on my nose in the bathtub. Thankfully, nothing happened. And I'm telling Guruji, I've made a stupid mistake. Just bail me out of this situation. My phone had submerged, it wasn't working, but somehow I think the neighbors would have complained and I rushed down to the concierge. So नीचे से जो building के maintenance वाले हैं, they came up to salvage the situation. The walls were not working, they told me. So they were faulty. So that was one grace that saved me. The other thing was they went down to switch off the riser valves, and these are valves of the entire column of the condo. So all condos in that column ending in that number, they all have a common riser valve. That was also not working. So that also kind of saved the liability in me. And then I was just praying to Guruji that there is a fair bit of damage. Just save me because the bill's going to be huge, and I don't want to be negligent. I mean, I don't want to be causing this. Just make sure that I'm paying my premiums, the owner's paying her premiums. I just hope the insurance covers it. I think it was an experience that I got that I couldn't sleep that night because obviously my landlord was very, very cooperative, and it was strange. I'm pretty sure it was Guruji's doing. So everything was salvaged. The emergency guys came and took care of the situation. And later on, the next day, I think my flatmate, he asked me, इस weekend महाशिवरात्रि है, फिर क्या करना है, जाना है? I said, जाना तो है, but ये जो situation हो गई है, I'm really, I'm really tense, and there are people coming every day to repair and look at stuff. So I'm not sure if we can leave the condo. But somehow it happened. I told Guruji that, Guruji, please, Saturday go Mahashivratri. I think that weekend, 18th. I said, please. So this happened on the 12th, and Mahashivratri was over the weekend. So I said, please, meri wo mat miss karana. So Thursday, casually again, my flatmate and I discussed that let's go for Mahashivratri. And I'm looking at the seva list, and meri Jal Seva nikli. So this is where I feel that's the only day I got Jal Seva. Not before that, not after that. And that was Guruji telling me, I've saved you. Don't make that stupid mistake again. Everything is okay now. I'm so thankful that I'm savaged. And Shukrana Guruji for always taking care of the most trivial things that we surround ourselves with. Shukrana Guruji. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी राम नवमी। जय गुरु जी।